Assam is celebrating one of its most significant festivals, Magh Bihu, with traditional fervor and widespread community participation across the state. Following the Uruka celebrations on the evening of January 13, people gathered early Wednesday morning to light the traditional Meji bonfire, a central ritual of the vibrant Assamese festival. Magh Bihu, also known as Bhogali Bihu, marks the conclusion of the harvest season and is celebrated throughout Assam. One of the most prominent customs is the burning of the Meji, large cone-shaped structures made of bamboo, wood and the thatched hay. The ritual symbolizes prayers offered to the fire god for prosperity, good health and abundance in the coming year. In Guwahati's Karguli area, residents assembled at dawn to light a traditionally built Meji. The event was enthusiastic participation with community members gathering around the bonfire, exchanging festive greetings and celebrating together. Community bonding remains a key element of the Meji burning tradition. The construction of the Meji is typically a collective effort with villagers coming together to gather materials and build the structure. The bonfire serves as a focal point for social interaction, accompanied by traditional songs, prayers and celebrations. His Guwahati MLA Siddhartha Apatacharya said, Magh Bihu is observed to celebrate the successful harvest and is marked by shared meals and collective festivities. He noted that the Belagar service as a common gathering place for villagers and emphasized the importance of worshipping fire, which he described as the foundation of civilization. Sharing her views, Bishakha Mahanta said Magh Bihu is celebrated after the completion of farming activities and the harvesting of new rice. She highlighted that the festival centers on food and gratitude and added that even in urban settings, people continue to uphold the traditions, celebrating the festival on both small and large scales. The Meji bonfire continues to remain a powerful symbol of Assam's rich cultural heritage and collective spirit during Magh Bihu celebrations. Magh Bihu is celebrated to enjoy and rejoice the successful harvesting that is done. So it is full of food, it is full of different vegetables, and the Velagar is a place where everybody from the village is to gather together and celebrate in a community way. So we are just continuing with the tradition. Oh, it's very, very important because here we worship fire, which is the basic of all civilization. हमारा ये बिहू, ये भोगाली बिहू 14 इयर्स, अभी 14 इयर्स हो गया इस बार। 14 इयर्स में ये भोगाली बिहू सेलिब्रेशन हुआ है, खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन हुआ है। एक्चुअली ये एक असमिया परंपरा है, मेजी और भेलाघर। मेजी हो थोड़ा उसी के निर्माण करता है और ये खेर से खेर बाम इसलिए ये सब सामान मिलाकर मेंबर करता है। ये एक परंपरा है, लेकिन इसका कोई जो वैदिक नियम से ये प्रज्वलन कर रहा है। लेकिन मेजी एक परंपरा है, मेजी तो असमिया का परंपरा है। वह मेजी को अग्नि देवता को प्रणाम करके ये मेजी जलाता है प्रत्येक बार। और अभी भी एक बार भी हुआ है और इस बार 14 इयर्स के लिए ये बिहू सेलिब्रेशन है। बहुत कार्यक्रम रहेगा हमें। अभी माघ बिहू में सब लोग जब खेती मतलब हो जाता है, उसके बाद जो राइस एंड ऑल निकलता है फर्स्ट, वो हम लोग सेलिब्रेट करके खाते हैं। दिस इज़ बिहू। ये बिहू सिर्फ खाने के लिए है और हम लोग ऐसे ट्रिब्यूट करते हैं। अगर गांव लोग में होता है तो हम लोग के खुद के ट्रेडिशन को भूल नहीं सकते, तो हम लोग शहर में भी सेलिब्रेट करते हैं, वेदर इट इज स्मॉल और बिग। ये हम लोग का ये है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल हम लोग ये काम करते हैं, ये फेस्टिवल मनाते हैं। मतलब ये हम लोग गांव से लाते हैं, गांव का आदमी को ऑर्डर देकर लाते हैं, हम यहाँ मंगाते हैं, मंगा के जलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे असामीज सोसाइटी में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये।